numericals on the p-n junction diode. More numericals on the p-n junction diode. It is decided that, first problem, it is decided that reverse saturation current of germanium diode should increase at the rate of 11% rise in temperature. It is found experimentally that a reverse voltage of 10 volt reverse saturation current through the diode is 5 microampere and the temperature dependency is only 7% per degree centigrade. Find out the value of leakage resistance shunting the diode. So it is decided that the reverse saturation current of germanium diode increase at the rate of, ये दिया हुआ है कि थ्रू द डायोड जो करंट है वो di by dt 1/i कितना है 11% या 0.1 and through the when supply voltage is 10 volt then current drawn from this source is 7%. डिपेंडेंसी कितना है इसका 7% है. जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तब ये डिपेंडेंसी रह जाती है ओनली 7%. सो ये डायोड दिया हुआ है. डायोड का ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा. सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड है और नेगेटिव पी साइड है. तो ये डायोड होगा अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन. अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सोर्स इज I0 थ्रू द डायोड इज I एंड थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इज IR. So I0 किसके बराबर होगा? द सम ऑफ दीस टू करंट्स. I0 is equal to I plus IR. This IR is independent of temperature. रेजिस्टेंस में करंट पे कोई भी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आएगा. शंट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द लीकेज ऑफ द चार्जेस. तो ये दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर बट दिस करंट एंड दिस करंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. सो differentiating first equation with respect to t, di0 by dt is equal to di by dt. IR is a constant value. ये फिक्स वैल्यू रहता है करंट की लीकेज रेजिस्टेंस और उसको टाइम पे डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस करंट. सो di0 is equal to di by dt. नाउ दिस इज गिवन. दिया हुआ है कि करंट थ्रू द डायोड कितना है? रेट ऑफ चेंज 11%. 11 का मतलब 0.1 and rate of change of current from the source when 10 volt बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है? 1/I0 di0 by dt is equal to 0.07. 7% का मतलब 0.07. थर्ड इक्वेशन को 4 से डिवाइड करता है. 1/I0 di by dt 1/I0 di0 by dt. We know di by dt is equal to di0 by dt from this इक्वेशन. यहाँ हमने देखा है कि कैसे चेंज होता है. ये दोनों चेंज सेम होते हैं. सो di by dt is equal to di0 by dt. ये दोनों कैंसिल हो गए. I0 in numerator, I in denominator. तो I is equal to 7/11 I0. दिस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में यदि रख देते हैं तो I0 is equal to 7/11 I0 plus IR. We can calculate IR 4/11 I0. And I0 is given as 5 microampere and solving this comes as IR का वैल्यू आता है 1.8181 10 to the power minus 6 ampere. And the शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट and करंट हमने कैलकुलेट किया 1.81. So the value of the शंट रेजिस्टेंस is 5.5 into 10 to the power 6 ohm or 5.5 mega ohm. This is the desired value. We want to find the value of this type of leakage resistances or shunt resistances of the diode. So this is the important problem. Sometimes came in the university exam in the previous paper. And the next problem is the rating of the diode. A diode has maximum power dissipation. Power dissipation दिया है diode का 0.5 watt है. Or what is the maximum current allowed into the forward direction if we allow the approximate forward voltage drop of 1 volt. तो करंट पूछा है उसने जबकि फॉरवर्ड वोल्टेज दिया 1 वोल्ट और पावर भी दिया हुआ. What is the approximate breakdown current that can damage the diode if the breakdown voltage is 150 volt. तो ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज दिया हुआ है, ये रिवर्स वाइज वोल्टेज दिया है. ये फॉरवर्ड करंट दिया हुआ है निकालना है और इसमें रिवर्स करंट निकालना है.
तो फॉर्मूला एक ही होगा, पावर डिसिपेशन इक्वल टू आई मैक्सिमम इनटू वीएफ. VF is 0.1, maximum current is 0.5 ampere divided by 1 volt. This is 1 volt. तो 1 डिवाइड करेंगे 0.5. पावर डिसिपेशन in the reverse bias breakdown voltage into IR. Breakdown voltage is 150. So IR is equal to 0.5 by 150 is equal to 3.33 milliampere. So these two problems are very important regarding the diodes, PN junction diode, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे. पहले में देखा हमने कि हमारा शंट रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस क्या होगा डायोड का. दो कंडीशन थे डिफरेंट, और ये दो डिफरेंट कंडीशंस में हमने फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज for what voltage there are, first point, for what voltage will the reverse current in a PN junction reach 90% of its saturation value at room temperature. रूम टेम्परेचर पे 90% ऑफ सैचुरेशन करंट पे कैसे मिलेगा मुझे. सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट फॉर ए forward bias of 0.5 volt, 0.05 volt. This is 0.05 volt to the current for the same magnitude of reverse bias. Same magnitude का reverse bias में क्या. Third point is if the reverse saturation current is 10 microampere, calculate the forward current for the voltage of 0.1 volt, 0.2 volt and 0.3 volts respectively. So there are three parts in this problem. The solution. As a germanium diode, if not given, assume germanium diode. Assume
डायोड इज जर्मेनियम। डायोड नहीं दिया है तो भी अज्यूम कर लिया हमने जर्मेनियम डायोड है। फॉर द जर्मेनियम डायोड फर्स्ट केस eta is equal to 1 and the equation of current is equal to I0 e to the power V upon eta Vt minus 1 and Vt is equal to T upon 11,600। T रूम टेम्परेचर लिया है हमने T को, तो 2 कितना ले लेंगे, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, then divided by 11,600, this is equal to, after solving this comes as 0.026 volt, this is equal to 300 by 11,000। So 273 से सम करेंगे 27 तो कितना आ गया 300। 300 by 11,600 आता है 0.06। और ईटा भी दिया हुआ है, वीटी भी दिया हुआ है, और ये करंट जो है ये 90% ऑफ I0 है, 90% ऑफ I0। सो I is equal to 0.90 into I0 is equal to I0 e to the power value of, हमें निकालना है the value of the voltage, so V upon eta 1 0.026 minus 1, I0 cancel। So after solving this value comes as 0.90 plus 1, this is actually 90% is a reverse saturation current, so this value is negative, so e to the power V upon 0.026, this is forward current but this is reverse saturation current, the value is given 90% of saturation current, so this is negative value, so minus 0.9 plus 1 is equal to 0.1, this is equal to 0.1, taking log of both the sides, natural log, e to the power b upon 0.026, log e to the base 0.1, so v upon 0.026 log e to the base e1 log e to the base 0.1, so v is equal to 0.026 into log e to the base 0.1, and after solving this value is minus 0.060 volts. So this is the voltage when the forward current becomes 90% of the saturation current. This is only possible in the reverse bias. So this is the reverse bias voltage. Second case is ratio of forward current and reverse current. I forward is equal to I0 e to the power v upon eta 1 and Vt is 0.026 minus 1. This is the value of, room temperature is same and the forward voltage is 0.05. Here 0.05 is the forward voltage. Forward bias voltage. Forward bias voltage given in the numerical is 0.05. Theta is 1. Vt is calculated 0.026 minus 1. And reverse current is equal to I0 at the same voltage, same magnitude, reverse voltage. तो minus हो जाएगा sign of the voltage minus 0.05. Another data is same, eta is 1 and Vt also 0.0. If you take the ratio of IF by IR is equal to, you find the ratio e to the power 0.5 upon 0.026 minus 1 upon I0 e to the power minus 0.05 minus 0.05 by 0.026 minus 1. After solving, this value comes as 6.38 minus
but the ratio is the 6.38. The ratio of these two current is, as these currents are opposite current, so sign is minus. Next part of the problem, C part. In the C part, IF dash, first case में हमें निकालना है. The forward voltage is I0 value is given as reverse saturation current is 10 micron. So I0 is equal to, here I0 is equal to 10 into 10 to the power minus 6 ampere. Eta same one, germanium diode. VT same value, room temperature 0.026 volt. So IF first case में, when the supply voltage is 0.1, I0 is 10 to the power minus 6, e to the power 0.1, 1 into 0.026 minus 1. After solving, this value is comes as 0.455 million. And when the temperature supply voltage becomes 2.2 volt, then e to the power 0.2, 1 into 0.026 minus 1, and after solving, this value is 1.01 ampere. And in the third case, this is second case, 21.7 million. And in the third case, the formula is same, just supply voltage changes 0.3, 1 into 0.026 minus 1, and this value comes as 1.01. So this is the type of problems in which the value of the reverse saturation current changes, supply voltage changes, room temperature changes. So we can solve these type of problems easily with the help of formula and some basic concepts. Next problem is calculate anticipated factor by which reverse saturation current of germanium diode is multiplied when temperature of the diode is increased from 25 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. Repeat the above for germanium diode if temperature range is 25 degrees centigrade to 150 degrees centigrade. टू एंटीसिपेटेड फैक्टर निकालना है, एक फर्स्ट केस में और दूसरा सेकंड केस. सो द फॉर्मूला फॉर I01 is equal to I02 to the power T2 minus T1 by 10. I01 is equal to
I02, or this take I02 and this is I01. This is I01 to the power t. T1 is 40. 40 minus temperature is in the phase 25 to 80. This is 80 degrees. 80 degrees. So 80 minus 25 by 10. I01 2 to the power 55 by 10. And this value is, after solving, 45.25. This is anticipated factor. Anticipated factor is 45.25. If you multiply this value, will give the value of I02. This is case first. This is case second. Here range is 150 to 25. So I02 is equal to I01 to the power 150 minus 25 divided by 10. I01 2 to the power 125 by 10. And after solving, this value comes as 57.5792. 5792.6. So anticipated factor is here 5792.6. There are two conditions in this problem. पहले कंडीशन में टेम्परेचर चेंज होता है 25 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहता है कि वो फर्स्ट केस के रिवर्स सैचुरेशन करंट में कितना मल्टीप्लाई करे कि सेकंड में, या कितने टाइम बढ़ जाएगा सेकंड में. So this current by this formula, every time degree centigrade rise in the temperature, the reverse saturation current becomes double. So formula is I02 is equal to I01 2 to the power T2 minus T1 divided by 10. तो every 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि 10 माइक्रो एम्पियर करंट है और टेम्परेचर जंक्शन का बढ़ा दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो 20 हो जाएगा, और 10 बढ़ा दें तो 40 में और 10 बढ़ाए तो 80. So every 10 degree centigrade rise in temperature, the current becomes double. So यदि हम 55 डिग्री डिफरेंस कर दें टेम्परेचर में, तो कितने टाइम्स हो जाएगा 45.25 टाइम्स ऑफ द करंट एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड हेयर 150 कर दें यदि 25 से हम, तो 5792.6 टाइम्स करंट आएगा दैट ऑफ I01 इनिशियल 25 डिग्री के करंट से. So these are the two numerical